First of all, the space is actually defined by length, breadth and height. So we require 7 feet height minimum. There are prescribed heights by the government, some books, codes and all. So how can we maximize the area? How can we maximize the volume? Say there any area has three components: circulation space, furniture space and activity space. Activity space is that same space can be used for different activities. The furnitures can be designed in such a way that it can be put into use as per your activity at different point of time. The bed can turn into a sofa or a reading table or a dining table. So you hang the bed from the wall, you pull it down, it become a bed, you lift it up. The chairs are designed in such a way that when you lift up the bed, the chairs and the dining table automatically unfolds. Obviously, you have to take care of the arrangement of the loose furnitures. So when you are using it as a dining table, so all the elements that are usually kept on the dining table has to go inside. So you have to take care of it in such a way that they do not break when you pull it or push it. So we have to take care of these features. Otherwise, we can very well do a proper planning. Previously, there were small projects in India. Now, large-scale projects are going on due to urbanization. You have to house lot of activities within a small space, or you have to have large projects. Basically, a 5-acre or a 10-acre project previously had say 300 users. Now there are 1800 users. We are planning for 1800 users in a 5-acre project. So, if there is no proper planning, how will you make the investment? सो ये क्लाइंट्स ने या इंडियंस ने समझे. फॉरेन से भी हमने बहुत शिक्षा लिए हैं, बट यू नो फॉरेन देयर पॉपुलेशन इज़ लेस, तो लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लेस पॉपुलेशन. यहाँ पे हमारा एक और चैलेंज है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर कैपिटल रिसोर्सेज. तो ये फॉरेनर्स ने ही हमें सिखाया कि हाउ टू मैनेज योर रिसोर्सेज. बेसिकली प्लानिंग इज एक्चुअली मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्स, लैंड रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. प्लानिंग उसी को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है ना. दैट इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग. See, digitally you can employ digital technologies in your designing of the furnitures. T&T is doing that. So you require less circulation space. You can sit in a space and put on your fan, put off your lights. You can create the ambience. You will require less circulation space. So you can have a drawing area or a dining area. Drawing area rather, example ले लेते हैं. You can make it in such a way that it can be formed or translated into a bedroom, additional bedroom if required in the night. So you can have a mechanized sofa cum bed. You just put a switch and it transforms into a bed, or a dining table which is not required actually in the morning or afternoon after its activity has finished. You can make it in a children play area, open children play area. Kids can use the floor to play. So you just push it up and stick it in the wall. Why do you require to have a dining area when you are not dining? See, interior decoration, it is not actually a decoration, it is a designing. Now tell me one question. If you have a study room with a red colored wall, will you love it? You should have a cool blue color or a cool green color. Then you will want to spend a lot of time there. Now what are activities can you make in a reading room or a library? So you can identify those. You can make the furniture in such a way. And then there comes acoustics. You can use it as a music room also while you are not studying. Same space using
one person is using at different point of time. So if you can design the space in such a way that in the evening time you use it for studies, in the late evening you can use it for some music activities, in the morning time you can use it for studies or painting maybe, so light has to come. The color of the walls has to be such that it should be soothing. You do not want to be, you want yourself to be tortured, right, with the colors. So all these things are actually part of the designers. Interior design has to understand the mood of the user. तो टीएनटी में सारे प्रोजेक्ट्स आप देख लो, फर्नीचर प्लानिंग उसी तरीके से होते हैं, ताकि कोई भी रूम जरूरत से ज़्यादा बड़ा ना हो, अनलेस देयर इज अ रिक्वायरमेंट बाय अ क्लाइंट। वी हम लोग क्लाइंट को बताते हैं कि व्हाट इज व्हाई डू यू रिक्वायर सच अ बिग बेडरूम। आपके पास बड़ी खिड़की हैं, लाइट एम्पल है, आपके ड्रेसिंग रूम अलग है, आपके टॉयलेट्स प्रॉपर साइजेस के हैं, आपके बेड का साइज़ तो आप 6 फुट बाय 6 फुट का बेड की जगह 8 फुट बाय 8 फुट तो लगाओगे नहीं। आपके टीवी का सभी एक साइज़ डिफाइंड होती है। आप बहुत बड़ा टीवी लगा दोगे बेडरूम में तो आपको खुद ही आप समझ नहीं पाओगे। आपको अगर टेनिस देखना है आपके बेडरूम में, तो आप सर ऐसे-ऐसे हिलाते रहोगे, इतना बड़ा टीवी लगाओगे तो ही ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, we need to see the anthropometrics. Anthropometrics is a study of requirement of human space. इस चेयर का हाइट क्यों डिफाइन हुई है? हमारे लेंथ ब्रेथ से ही तो डिफाइन हुई है। तो इफ़ यू गो टू यूएसए और इफ़ यू गो टू इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहाँ पे ह्यूमन कद थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे टेबल चेयर ये सब की साइजेस थोड़े से बड़े होते हैं। और यू गो टू सम स्पेस वेर इन से अफ्रीका, जहाँ पे बंटू करके एक ट्राइब है, उनके कद 4 फुट से ऊपर होते नहीं है। वे कैन दे यूज़ दिस चेयर टू सिट? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन एक्टिविटी। अब जब ह्यूमन एक्टिविटी का हमारा एक स्पेस डिफाइन होती है एंथ्रोपोमेट्रिक से, व्हाई डू यू रिक्वायर अ लार्जर स्पेस? ये हमारी बहुत बड़ी डिबेट है। सो TNT, I am fortunate enough that my clients are good enough to understand all this. There is a project, Blue, the Blue, wherein the interiors are designed in such a way that we are giving the clients 6 options according to their taste. Each one has different taste, different colors, and that too उसके अंदर भी हम मतलब कुछ थोड़ा सा और भी रख रहे हैं कि सेम थीम में भी एक आधा कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे। सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग द इंटीरियर डिजाइनिंग। उसमें भी टॉयलेट्स जो डिजाइंड है, प्रॉपरली डिजाइंड है, यू डू नॉट नीड टू go out your bedroom cupboard to have your clothes. You have wardrobe areas in your toilets and all. So lobbies are separate. You have a puja also. You can perform your puja over there. And near अब हमारे इंडियंस में क्या है कि हम घर से जब बाहर निकल रहे हैं, हम भगवान को देखना चाहते हैं, तो ऐसे डिज़ाइन भी करे हुए हैं। तो इस तरीके से हम ब्लू को प्लान किए। ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट। यू आर रखिंग only 2 apartments per floor. So this is a luxury, feeling of luxury.